Now let's try to understand the meaning of common intention. And for that, if you want to understand, please let's start for the common intention. Understand the meaning of common intention, and for that purpose you will have to understand the difference between similar intention and common intention. These are two different words, similar intention and common intention. Similar intention means एक जैसा आशय, कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य आशय. What is common between me and you? For example, पहले ऐसे समझिए. See, suppose I give you a test. I give a test for the this कि भी after 1 week there shall be a test. Some of the students are infuriated कि बहुत टेस्ट हो गए. Sir has, we will kill him now. Okay. Now Gaurav decides individually to kill me. I will take test of sir how he survives now. Pawan takes a different note that I will kill Vijayan sir. Neetu madam says I will kill, but they have no idea of each other. Everyone comes to Vidhi and they shoot upon me. I get killed. Are you going to explain or not? Neetu, the fire of Neetu is missed. Gaurav, the fire of Gaurav is hitting my legs, and only the fire shot of Pawan hits me at my heart and I get killed. समझ रहे आप? तो these three persons attempted to kill me and one of whom became successful. Now in this case all these three are having similar intention. इन तीनों का एक जैसा आशय था, मुझे मारने का. एक व्यक्ति ने मेरे जो गोली चलाई मेरे लेग में लगी, एक की मेरे हाथ में लग गई और एक की मेरे दिल पे लगी, जिससे मर गया मैं. समझ रहे हैं आप ये? तो यहां पर आप देखोगे इन तीनों का आशय कैसा है, सिमिलर इंटेंशन है. अब एक दूसरी सिचुएशन है, मंजीत, ईशान, विष्णु, दे डिस्कस द प्लान कि टुडे कलेक्टिवली वी विल डू समथिंग वेरी गुड, है ना. एंड दे ब्रॉट पॉइजन. One brought poison, one dipped it in, mixed it in the water or whatever tea, and one served it to me. I died. In this case, जब तीन व्यक्ति हैं, तीनों मारना चाह रहे हैं, तीनों जहर, एक जहर लेकर आया, एक ने जहर मिलाया, एक ने जहर का चाय मुझे दे दिया और मैं मर जाता हूं. तो यहां पर देयर इज शेयरिंग ऑफ इंटेंशन. वी विल से दिस इज द केस ऑफ कॉमन इंटेंशन. तो देयर आर, यू मे हैव सिमिलर इंटेंशन and you may have common intention. So section 434, for the applicability of section 34, what is required? That existence of common intention and not the similar intention. And on this point, to make you understand, the leading case law is what? Mehboob Shah versus Emperor. You cannot understand this chapter on section 34 without understanding this case law. Mehboob Shah versus Emperor. Please see this. On August 25, 1943, at about sunrise, सूर्य उदय के समय लगभग, one Allahdad, the deceased, this man will get killed. Allahdad, along with few others, left their village and proceeded in a boat for cutting and collecting reeds on the bank of river Indus. सिंधु नदी के किनारे पर निकलता है. कौन निकलता है? अल्लाहदाद निकलता है, और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं. तो अल्लाहदाद along with few others, he proceeded for what? Collecting reeds on the bank of river Indus. What is the time? It is about sunrise. Got it? This is the first important fact for you. Now second, when they had traveled about a mile down the stream, they saw Muhammad Hussain Shah. Who? Muhammad Hussain Shah, father of Wali Shah, bathing on the bank of river. Now after, when they traveled some distance, they met him, Muhammad Shah. समझे? Muhammad Hussain Shah ने क्या कहा? Warned them against collecting reeds. कि you are going for collecting reeds, don't do that. From land belong to, because this land belongs to me. So what is the bone of contention now? Bone of contention is collection of reeds
Muhammad Hussain Shah is saying don't do that, and Allahabad and his team members are saying we will do it. समझ रहे हैं आप बात ये? तो नाउ देयर आर टू पार्टीज, समझ गए आप लोग? मोहम्मद हुसैन शाह और तो अलाहाबाद इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट कलेक्टेड रीड्स फ्रॉम द लैंड एंड रिटर्न वापस आ रहा है, स्टार्टेड रिटर्न। समझ के झगड़े जड़ समझ में? एक पार्टी कौन सी है? अलाहाबाद की है। अलाहाबाद और उसके साथी वो सुबह ही सुबह निकलते हैं कि रीड्स कलेक्ट करके लाएंगे, लेकिन किसके लैंड से ला रहे हैं? दूसरे की जमीन से ला रहे हैं। दूसरा कौन है? ये मोहम्मद हुसैन शाह है। क्या कहता है वो? खबरदार जो मेरे लैंड से आपने ये ऐसा किया। लेकिन अलाहाबाद नहीं माना, जो चाहे कर लो, मैं ऐसा करके रहूँगा। सही है। और रीड कलेक्शन हुआ और वापस आ रहा है। आई होप यहाँ तक फैक्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इससे आगे वाली बात, इस स्लाइड को देख लीजिए, आप ज़्यादा समझ जाएंगे आप लोग। तो ये टीम हो गई, देयर आर टू डिफरेंट पार्टीज नाउ, अलाहाबाद अलोंग विद अदर्स। what they saw? Muhammad Hussain Shah bathing on the bank of river, मिलता है वो। and what Muhammad Shah did? warned them against collecting reeds, but what they did? they collected reeds from land and started running journey. This is what so far. Then while they were returning with the bundle of reeds and sailing upstream in the river, one Ghulam Qasim Shah, nephew of Muhammad Hussain Shah, asked them to deliver the reeds that were collected from his uncle's land. मेरे चाचा की जमीन से जो रीड्स कलेक्ट की हैं वो तुम मुझे दे दो, रिटर्न कर दो। कौन है ये? भतीजा। क्या नाम है? गुलाम कासिम शाह। किसका भतीजा है? मोहम्मद हुसैन शाह का। वही मोहम्मद हुसैन शाह जिसने अभी वार्निंग दी थी। किसको वार्निंग दी थी? अलाहाबाद और उसकी टीम को दी थी। सही है। अगर आपसे ऐसा ना हो, अलाहाबाद, मोहम्मद कासिम, इसके उसमें झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन लर्न ABC लाइक दिस ऑल्सो, है ना। दिस इज नो नेसेसिटी दैट यू रिमेंबर द एग्जैक्ट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? दैट यू शुड ट्राई टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, because what you are going to do, whether this is the case of common intention or this is the case of similar intention. Got it? Now Ghulam Qasim Shah asked to deliver them, कि whatever you have collected from my uncle's land, return it. Now this is Allahabad, this was the team, Allahabad along with others. Ghulam Qasim, what he did? Asked him to deliver back, and this party refused this. So what he will do? Caught the rope of the boat and pushed Allahabad and gave him a blow with a stick. नहीं मानेगा तो ये ले, एक उसके जड़ दिया, एक डंडा लगा दिया उसके, बोट पकड़ ली, बोट की रस्सी पकड़ ली और अलाहाबाद को धक्का दिया और उसको एक डंडा मार दिया। किसने मारा? भतीजे ने मारा। किसके भतीजे ने मारा? मोहम्मद शाह के भतीजे ने मारा। समझ रहे हैं आप? तो नाउ यहां पर दिस इज द सीन ऑफ फिजिकल वायलेंस। ऑन द वन पार्ट देयर इज अलाहाबाद एंड टीम मेंबर्स, ऑन द अदर हैंड देयर इज ओनली वन पर्सन, गुलाम कासिम। गुलाम कासिम यहां पर अभी तक अकेला लड़ रहा है, ही इज अलोन, गुलाम कासिम। गॉट इट? नाउ अलाहाबाद, देन इट इज वेरी नेचुरल, जब अलाहाबाद वाज असॉल्टेड, देन व्हाट ही विल डू? Allahabad then picked up a bamboo pole from the boat and stuck Ghulam Qasim Shah. अलाहाबाद को जब मारा गया तो अलाहाबाद ने एक बैम्बू पोल, एक बांस का डंडा लिया और किसको मारा? स्ट्रक गुलाम कासिम, उसको डंडा मारा। नाउ अगर डंडा पड़ेगा, गुलाम कासिम कितना था? अकेला था, ही वॉज अलोन। नाउ ही इज बीइंग बीटन बाय अलाहाबाद। नाउ नेचुरली what he will do? He will shout. Qasim Shah then shouted for help. बचाओ बचाओ गुलाम कासिम, who he is being beaten by the Allahabad. Organization or not? So there is a ongoing fight between Ghulam Qasim and Allahabad and team, and it was then Wali Shah and Mehboob Shah came up with loaded guns. Now try to understand who came. Wali Shah. Who came? Mehboob Shah. Why they came? Because they heard what? Shouting of Qasim Shah, Ghulam Qasim Shah. क्या पुकार होगी? Help me, बचाओ।
तो नाउ व्हाई दे आर कमिंग टू विद लोडेड गन्स? टू हेल्प गुलाम कासिम. What is, if I am Wali Shah, I am hearing shouting of Ghulam Qasim and I am approaching to spot. So what is my intention? My intention is to save Ghulam Qasim. This is my intention. Similar is the intention of Mehboob Shah. Mehboob Shah की intention क्या है? बचाओ जाके गुलाम कासिम को, वो बुला पुकार रहा है हमें, है ना. दो these two persons rushed to the spot for saving one person, Ghulam Qasim Shah. So what is their intention? Intention is similar. What is intention? To save Ghulam Qasim Shah. Please raise hand. यहाँ तक बात समझ आ गई तो very good. This is, you can see in slide, this is Allahabad refused to return. Okay, Ghulam Qasim asked to deliver him and then gave blow. Okay, and then Allahabad what did? Struck Ghulam Qasim Shah, and then Ghulam Qasim shouted for help, and then Wali Shah and Muhammad Shah came up with the loaded gun. So this is a sequence I have picturized for you. आप समझ सकते हैं इसको क्या sequence है ना. Next come on seeing them. Allahabad and his friend Hamidullah tried to run. Now this is the best policy. When you are in danger, run away, run छोड़, है ना. तो Allahabad और उसके दोस्त जो हमीदुल्लाह, उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया. ऑन सीइंग देम, किसको देख करके? वली शाह और महबूब शाह को, कि अब ये हम पर हावी हो गए हैं, उनके पास क्या है? लोडेड गन्स हैं. भागने की कोशिश की, बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बाय वली शाह एंड महबूब शाह. महबूब शाह ने ऐसा उनको नहीं करने दिया. वली शाह फायर्ड एट हमीदुल्लाह. वली शाह ने किस पे मारा? हमीदुल्लाह को, हु डाइड ऑलमोस्टली इंस्टेंटेनियसली. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर दिस फैक्ट. हु किल्ड हिम? हमीदुल्लाह. वली शाह. वली शाह के साथ में कौन आया था? महबूब शाह आया था. सही है. महबूब शाह फायर्ड एट Allahabad causing injuries to him. तो these two persons fired at different persons. महबूब शाह fired at Allahabad and Wali Shah at Hamidullah. Hamidullah was killed, but Allahabad was only injured. You got it? Who are the accused persons here now? Wali Shah, and other is what? Mehboob Shah. Why did they come to there? Hearing the shouting of Ghulam Qasim to save him, but they came with the loaded guns. समझ में आ रही बात आपको? Next. This is Allahabad and Hamidullah, है ना. They try to run away. Got it? उधर क्या हुआ था? गुलाम कासिम शाह shouted for help. Who came? Wali Shah and Mehboob Shah. Wali Shah fired at Hamidullah, who died. Mehboob Shah fired at Allahabad, causing injuries to him. And then Wali Shah absconded. Who is the Wali Shah? Who committed the murder of Hamidullah. मारा गया, भाग गया वो. हमीदुल्लाह को मार के भाग गया. महबूब शाह एंड गुलाम कासिम वर tried under section 302 read with 34 for the murder of हमीदुल्लाह. समझे आप? कौन पकड़ा गया? महबूब शाह पकड़ा गया. दूसरा कौन पकड़ा गया? गुलाम कासिम शाह पकड़ा गया. क्या चार्ज लगा? 302 का रेड विद 34. कि ऐसा माना जाए. एक्चुअल में क्या है? हु किल्ड हिम? वली शाह. हमीदुल्लाह वाज किल्ड बाय वली शाह. But what is the charge of prosecution? Because we are applying now section 34. It means Mehboob Shah and Ghulam Qasim Shah both should be like this. Both of them, each of them, Wali Shah and Mehboob Shah. This is Mehboob Shah and Ghulam Qasim Shah. Each of them should be treated liable in the same manner as if they have killed the Hamidullah. It means according to charge, what is the charge of prosecution? कि महबूब शाह should be treated as if he killed Hamidullah. Ghulam Qasim Shah should be treated as if he killed Hamidullah. But actually who killed? Wali Shah. ऐसा माना जाना चाहिए कि हमीदुल्लाह की भले ही मौत किसने करी? वली शाह ने की.
लेकिन अगर सेक्शन 34 अप्लाई करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो खून महबूब शाह ने अकेले किया हो, जैसे वो खून गुलाम कासिम शाह ने अकेले किया हो। अगर 34 सक्सेसफुली लगता है तब इट मींस उनको मर्डर का ही कन्विक्शन होना चाहिए। ये एलिगेशन है प्रोसिक्यूशन का। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो, है ना। चलिए देखिए लीडिंग केस है, कई बार पूछा जाता है आपसे ये। सो क्वेश्चन यहां पर ये है, अलग अलग काम किए इन्होंने। वली शाह ने क्या किया था, फायर्ड एट हमीदुल्लाह, दिस वाज द एक्ट डन बाय वली शाह which resulted into the death of Hamidullah. Mehboob Shah what? He fired at Allahabad and Ghulam Singh Qasim gave blow. These are different things. Ghulam Qasim की responsibility क्या थी? What actually was done by the Ghulam Qasim? He only hit Allahabad with bamboo. What the act actually done by Mehboob Shah? He fired at Allahabad. And what was the actual act of Wali Shah? He killed Hamidullah. Now 34 की अप्लाई, इफ यू वांट टू अप्लाई 34, ईच ऑफ देम महबूब शाह, गुलाम कासिम और वली शाह, दे शैल बी ट्रीटेड दैट होल ऑफ द एक्ट was done by him alone. It means महबूब शाह killed Hamidullah, महबूब शाह attempted to kill Allahabad and महबूब शाह also hurted Allahabad by him. This is, are you getting it or not? So this can be the result of 34. Now come to what happened in this case. Mehboob Shah was sentenced by the trial court to 7 years rigorous imprisonment for attempt to murder of Allahabad. महबूब शाह को कौन सा दंड मिला? नो, इट मींस व्हाट? ट्रायल कोर्ट डिड नॉट अप्लाई 34 इन दिस केस। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट द केस, फिट केस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34। अपील हुई, अपील में क्या हुआ? लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा? नो, this is the fit case for application of section 34 and they committed the, because both shall be punished for the murder of Hamidullah. And now please try to understand one fact कि मैं हमेशा कहता हूँ, see, trial court gave different judgment, high court gave different judgment, so who are the you? If any question is asked, if any problem is asked to you in your mains, don't be afraid कि how you are deciding, what is your decision, whether this is the case of murder or whether it is the case of couple homicide, whether 34 will be applied or not. It is not important in your mains. What is more important? What kind of reasoning you give. So in case mains questions, be free. Whatever you decide, you give sound reasons for your decisions. You will get very good marks because you see, same facts are there. Trial court is applying those facts, that law in different way. High court applied it. So same kind of mistake, same kind of different opinion may be expected from you as well. Are you going on? What is more important, whether you applied mind or not? So coming to this case, Lahore High Court applied section 34. Now the case came for this because Mehboob Shah appealed to Privy Council, and this is a question for prelims. Mehboob Shah case was decided by Supreme Court of India or Privy Council. This is the case decided by Privy Council. Now, against his conviction, the appeal was allowed Privy Council and conviction for murder was set aside in this case. What they held in this case? कि there should be existence of common intention, है ना? And in this case, there was a similar intention of Mehboob Shah and Mehboob Shah or and Wali Shah, and the similar this is the case of similar intention. Intention was to save Ghulam Qasim, and on the spot they acted according to their individual intention. There was no sharing of, there was no common intention. समझे यहाँ पे? तो this was the case of similar intention, not common intention. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो. So what do we mean by the common intention? Common intention implies pre-arranged plan. These are the words, phrases which are used, and you should remember these words. What? Common intention implies what? Pre-arranged
plan. Pre-arranged plan means prior concert or prior meeting of mind. समझे? These, what do you mean by that? We have understood the differentiation between common intention and similar intention. Then what do we mean? How can we define the common intention? When can we say there is an element of common intention? It shows what? When there is a pre-arranged plan, पूर्व नियोजित योजना हो. You can say prior meeting of mind. Action से पहले there should be intention, common intention, meeting of mind. You and me are sharing the same intention. This is called technically prior meeting of mind, prior concert, pre-arranged plan. This is what? Pre-arranged plan, prior concert, prior meeting of minds. You can say like this. समझे? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन. एंड महबूब शाह is the leading case for difference in similar intention and common intention.